जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे जैसे कि डांडी मार्च के बारे में फ्रेंड्स। दैट्स एन एक्ट ऑफ ए नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो लेड किए थे महात्मा गांधी जी ने। देखिए की चीज क्या था फ्रेंड्स, देखिए renumberings of a section, common sections under the ITC reassigned the murder punishment shift from section 302 to section 1011. देखिए फ्रेंड्स, सेडिशंस ऑफ ए टेररिज्म, सेडिशंस लॉ जो था फ्रेंड्स 124 सब प्लस ए ऑफ आईटीसी, ये सेक्शन उसमें ऐड किए थे वो लोग 150। एक्सप्लिसिट डेफिनेशन था ऑफ ए टेररिज्म इंट्रोड्यूस। इंक्रीज द मैजिस्ट्रेट अथॉरिटी, मैजिस्ट्रेट अथॉरिटी को इसको इंक्रीज किया गया था। एम्पावर द मैजिस्ट्रेट विद ग्रेटर फाइन इंपोजिशन, अगर वो ज्यादा फाइन भी इंपोज कर सकते हैं अथॉरिटी। एंड ब्रॉडेंड द स्कोप ऑफ डिक्लेयरिंग समवन्स प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट क्या देखिए, इन ईस्टर्न इंडिया पेमेंट ऑफ द चौकीदारी जो टैक्स वाज रिफ्यूज्ड, जिसका बंगाल में जेएन सिलेगुप्ता defined government laws by reading openly the book banned by the government. Defenses of a forest law resume करता है mass character in Maharashtra. This movement had taken in fair hold in provinces of Uttar Pradesh, Orissa, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Assam. Who lead the march at the धरासना शॉर्ट वार्स? क्या वो सरोजिनी नायडू जी थे या सी राजगोपालाचारी जी थे? क्वेश्चन पुट कीजिएगा। चलिए चलते चलते और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। Which among the following countries has become the 32nd member of a newest of a North Atlantic Treaty Organization NATO का? ऑप्शन ए लीजिए फिनलैंड, बी में यूक्रेन, सी में स्वीडन या डी में नॉर्वे। फ्रेंड्स आप दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आइए फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू।